सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम भरपूर है और आज एक और दूसरी रिपोर्ट दूसरे शहर से, दूसरी स्टेट से। जैसे आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान राब्तों का एक नाम है, इसलिए ये अवामी प्लेटफॉर्म भी है और आपकी आवाज़ भी है। नाज़रीन, हम हमेशा दूर दराज से आपकी रिपोर्ट्स लाते हैं ताकि आपको एहसास हो कि दूसरे शहरों में, दूसरी स्टेट में अमेरिकन पाकिस्तानी क्या कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम की तरतीब और पेशकश मैं आपको बयान करूं, आइए देखते हैं प्रोग्राम की हाईलाइट्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका भर में पाकिस्तानी मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं, जहां वो अपने रोज़गार से मुंसलिक हैं, अपनी फैमिलियों को परवान चढ़ा रहे हैं। वहां पे उन्होंने ऐसे अदारे भी बनाए हैं जो पाकिस्तान की मावनत करते हैं। उसमें से एक अदारा है पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में है। एक माह पहले वहाँ पे एक बहुत ही पुरवकार तकरीब हुई थी, एक अवार्ड सेरेमनी उन्होंने तरतीब दी थी। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया ह्यूस्टन टेक्सास में और मेरा वहाँ जाना हुआ क्योंकि जियो और सफ़ीर पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे। और ये तकरीब शुरू से आखिर तक बहुत शानदार रही, जिसको ऑर्गेनाइज़ करने में जनाब सईद शेख साहब ने बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा किया। यूँ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बड़े एक्टिव रहे इस प्रोग्राम में और लग रहा था कि प्रोग्राम को बड़े प्यार और मोहब्बत से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरसे दराज से ह्यूस्टन टेक्सास में काफ़ी बड़े काम किए हैं, जिसमें डेलीगेशन की रवानगी पाकिस्तान और आने वाले जो डेलीगेशन होते हैं पाकिस्तान के, उनके साथ मेल जोल बढ़ाना, ये पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है। नाज़रीन, आइए बिला की ताख़ीर के देखते हैं ये रिपोर्ट ह्यूस्टन टेक्सास से पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। ये एक अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें मुख्तलिफ सैनेटर, कांग्रेसमैन और पॉलिटिशियन, पुलिस चीफ ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और ये तकरीब बहुत शानदार और कामयाब रही। मुलादा फरमाइए ये रिपोर्ट। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline.
I would now like to bring up the chairperson of the 2011 PCC USA Gala Committee and past president of PCC USA, Mr. Mohammed Saeed Sheikh, to recognize the elected officials and other dignitaries here tonight. Allow me to formally welcome chief guest and keynote speaker of this gala, the 34th United States Secretary of Commerce, Honorable Don Evans. Now I proudly recognize the honoree of PCC USA 2011 Business Award, Mr. S. Javed Anwar, along with his beautiful wife Vicky Anwar and children Ryan and Leslie. Representing the government of our motherland, Pakistan, please recognize Honorable Consul General Aqil Nadeem. We do also have a distinct honor of hosting this evening former Congressman Steve Stockman. Tonight, PCC USA feels proud to host a Houston businessman who also served in public office and contributed to boosting Houston economy. I recognize the presence of former Mayor Bill White and his wife, Andrea White. All the way from Midland County, please welcome County Judge Mike Bradford. Amongst us, we also have Consul General of Turkey, Honorable Akil Oktem. And surely, our Sheriff, Adrian Garcia. Please also welcome some out-of-city visitors, all the way from Los Angeles, California, Mr. Waqar Ali Khan of Safir Pakistan of GeoTV. And from Dallas, we have Mr. Zahid Khanzada of Geo News and Jan Group. Last but not the least, I feel privileged in recognizing the following Pakistani media and would like to convey our thanks to them: Pakistan Chronicle, Pakistan News, Pakistan Times, Pakistan Journal, Urdu Time, Muslim Observer, and Pakistan Post. I hope that you all will enjoy this year's production of 15th Annual Banquet of Pakistan Chamber of Commerce, USA. Okay, I'd like to now introduce the President of PCC USA, Mr. PJ Savati, to deliver his address. Under my watchful leadership, we have promised ourselves to do still more. We have already held several seminars in the last few months and expect to continue proactively employing this useful tool for remaining of my term. We will be accelerating our efforts to help the economy get healthier rapidly. I am thankful to our immediate past presidents, they are sitting there, and the board for their help in respect whenever needed. I am confident with my 2011 team and the board of directors and the committee chairs who are implementing their programs and shall continue to do so for the rest of the year. PCC was established in Houston by 50 founding members on the 14th August in 1997, symbolic of the 50th Golden Jubilee of Pakistan Independence Day, and to bring Pakistan and US closer through promoting trade and investment. I also pray to God to give us the strength to work for the prosperity of our community in these turbulent times. Finally, I am very grateful to all the executive board members for their dedication that has brought this chamber to a new level of excellence. God bless America and Pakistan, and long live the Pakistan-American friendship.
Thank you so much, Mr. Savati. We also have today with us the Consul General of Pakistan in Houston, so may I please ask the Honorable Akhil Nadeem to come to the stage. I thank Pakistan Chamber of Commerce for providing me this opportunity to speak to business leaders. I am also grateful to Secretary Evans for his presence here. I am confident that such exchanges will result in further expansion of trade between Pakistan and the United States. The Pakistan Chamber of Commerce is dedicated to the development and promotion of commercial and trade activities between the business communities of Pakistan and the United States. Its efforts in vigorously promoting measures to benefit and protect the interests of businessmen both in Pakistan and the United States are laudable. The Pakistani economy continues to perform well. This is commendable given the political rise in the country. Pakistan has paid an enormous price for its stand against terrorism. More of our soldiers have died than all of NATO's casualties combined. 2,000 police officers and as many as 30,000 innocent civilians, and a generation of social progress for our people have been lost. Some in the US press have suggested that Pakistan lacked vitality in its pursuit of terrorism, or worse yet, that we were disingenuous and actually protected the terrorists we claim to be pursuing. Such baseless allegations may make exciting cable news, but it does not reflect fact. Pakistan had as much reason to despise Al-Qaeda as any nation. The war on terrorism is as much Pakistan's war as it is world's. Let me conclude by saying that Pakistan is committed to fulfill all its international commitments and needs continued support from friends in the United States. It is time for extensive engagement and not disengagement. Pakistanis are resilient people, and our current economic indicators show that despite enormous difficulties, Pakistan's economy has taken off, and doing trade with Pakistan would be mutually beneficial for both Pakistan and the United States. Thank you. Now it is my honor and pleasure to ask former Mayor Bill White, well, I'm just going to call you Mayor Bill White, to come to the stage to present our honoree. Secretary Evans and Consul General, my friend Sheriff Garcia, Judge Bradford, and distinguished guests, let me introduce our honoree, Javed Anwar. I want to thank my family, first of all my mother. Unfortunately, she could not come down from the room. She's not feeling good. Thank my mother for not only raising me as a single mother, but also making the financial sacrifice she had to make to put me through one of the finest public schools in Karachi, Pakistan. I would like to thank my wife Vicky for raising two wonderful kids, Ryan and Leslie, and all the sacrifices she had to make in order for me to devote long hours to establish a successful business in oil and gas. I'd like to thank all my friends from childhood and the friends that I have made since moving to USA for their moral support and encouragement they provided, especially during the bad recession in the oil and gas business for nearly 2 decades, starting in early 80s. I'd like to thank my coworker and especially Linda Morton. Unfortunately, she could not be here. She's going through some treatment. She worked with me over 30 years. I appreciate her long hours,
her critical advice and constructive argument over 30 years. I'd like to thank Don Evans for his friendship, guidance, and coming all the way from Midland to Houston to be the guest speaker. I got to this point in my business by working hard, putting long hours, honoring all my agreements, entered, oral or written, and then leaving the outcome to God. I live in Midland, Texas, which is a very conservative town. Except for a few occasions, I never felt like an outsider. With local oilmen, Midlanders, or any other place in the U.S. I'd like to advise all of you who have immigrated to get involved in your community, irregardless of color, religion, or ethnic background, and give back to your community morally, physically, and financially. This will help you become a better citizen and become a part of this society and culture. Again, I'd like to thank the Chamber for presenting me with this honor. Finally, the most important thing I'd like to say, I'd like to thank America for providing this opportunity for everything that I have achieved. Thank you very much for being here. The co-chair of the Congressional Caucus on Pakistan, the Honorable Congresswoman Sheila Jackson Lee, who just stepped off of an airplane. Thank you for being here tonight. Would you like to come up? The Pakistan Chamber of Commerce is a vital organization. I am proud of the work that you have done. And my challenge is, as I listen to Consul General Nadeem, is to speak about the partnership and the engagement that we need from you. As all of you know, I founded the Pakistan Caucus in the United States Congress, and little did I know how active and necessary that caucus would be. Because it is important to note that the people of Pakistan are our friends. They seek the same goals and opportunities as Javed did, and particularly as he mentioned his single mother, who provided for him a school in Karachi that gave him the grounding to be able to come to the United States. To the Pakistan Caucus, that should be our commitment to the children of Pakistan today, to provide them with the education and the schools that will allow them to go anywhere in the world or to be leaders in Pakistan. Education is crucial, and I encourage the Chamber to be engaged with the educational system and the new attitudes and approaches to helping the children of Pakistan be educated. As you well know, in the last 2 years we passed the Kerry Lugar funding. It happened to be Berman funding in the House, which I was an instrumental part of passing it and adding language to the legislation that talked about governance and democracy. Those monies are still in order, and they are to be used as a friendship to between the American people and the Pakistani people, for business, for economic development, of course, for education and social issues. Those dollars are deserving, and we will continue to work so that we can share those dollars with the Pakistani people. We want to be friends. So to all the physicians in the room and all the business persons in the room and all of the persons who are committed to the Chamber's great work, keep going, keep it up, and be engaged, and help us be a better friend to Pakistan and help the Pakistani people that are in the state of Pakistan be a friend not only to America, but to the world. We can do it. We're a people that understand peace and believe in peace. So again, congratulations for your outstanding commitment to business. President Swati, if you would come up as I present this resolution to you, the President of the Chamber, if you would please come up and receive this resolution. Okay, now I'd like to introduce a founding member of PCC
PCC USA and a longtime legal counsel of the organization who, as was mentioned earlier, is involved in a runoff election in the city of Sugar Land for a city council position. So Ms. Farha Ahmed, she's going to introduce our chief guest and keynote speaker tonight. Please welcome her. And I think it's a great honor and pleasure to welcome Secretary of Commerce Donald Evans. Thank you, Bob. That was absolutely very kind, very thoughtful. There was a famous American abolitionist, Harriet Tubman. She described freedom once. She said it like this: I looked at my hands to see if I was the same person. Now I was free. There was such a glory over everything. I felt like I was in heaven. That's freedom. And the people in the Middle East are beginning to feel it. Freedom is on the march. We can't lose heart. And that's one thing that worries me about America, is we can't disengage. It's our responsibility to continue to engage. More freedom abroad, more secure at home. I'm optimistic. I don't think we will lose heart. I think that the power of freedom is just too much. I think that as I look at the Middle East and I look at other parts of the world, I think that the young people, and in a way they can connect now with communicating with the internet or Twitter or Facebook or whatever it is, the power of all of that is just phenomenal. And that's certainly what has driven in a big way what has happened in Tunisia, what's happened in Egypt, and what is happening in Syria. I mean, Syria, they've shut down the media, but that doesn't matter. I mean, people can take their videos of it and get it out on YouTube, but for the whole world to see. So things have changed for the better. We have more people living in freedom, and we have less people living in poverty. But we still do have a long way to go. And America must be the glory and light of the world. America must continue to be an America of care, America of compassion, America of love, and America of freedom, and the whole world should know it. And so I would just tell you, to each one of you, understand the power there is in this room. Understand the power that you have to do something about it. And it can be one heart, one soul at a time, two blind boys in Western China. That's part of it. But each one of us has got a role to play. So I would encourage all of you to continue to think about what you can do and what we all can do to continue to move toward a goal of all mankind enjoying the glory of being free. I'd like to ask Mr. Lake Rothman, Chairman of PCC USA Advisory Council, as well as Mr. Gul Faraz Khan, past President of PCC USA, to come on the stage and present a token of appreciation to the Secretary. It is our honor on behalf of PCC USA to present this award to Secretary Don Evans. Thank you, sir. On behalf of Pakistan Chamber of Commerce, Executive Boards, and our organizing committee, I would like to thank each and every one of you. And presence of our chief guest and the honoree and every one of you have tonight made this memorable event and has added another chapter to the storied history of PCC USA annual event. Special thanks to the management of Houstonian, to all our sponsors, and all those who contributed to the annual issue of Spokesman,
Our thanks goes to all the vendors and suppliers. PCC USA thanks to the media personalities for their kind supports and healthy criticism. Once again, thank you all, and God bless you, and God bless America, and God bless Pakistan. Thank you. नाज़रीन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज की लोकल ग्लोबल में बहुत कुछ हमने शामिल किया है। खुसूसी एक रिपोर्ट है डेफिनेटली अपना के कन्वेंशन की, वेरी स्मॉल ब्रीफ रिपोर्ट बिकॉज जियो वाज सफ़ीर पाकिस्तान मीडिया पार्टनर, और ये हमारा तीसरा साल है कि हम अपना जैसी बड़ी तंजीम के मीडिया पार्टनर रहे हैं। लगातार 3 साल सफ़ीर पाकिस्तान और जियो टीवी। इसके अलावा ये भी हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 5 स्टार होटल में हमने हर कमरे के अंदर जियो टीवी दिखाने के इंतज़ाम किए, और ये सिलसिला 3 साल से चला रहा है बड़ी कामयाबी से। और डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है सफ़ीर पाकिस्तान और सफ़ीर पाकिस्तान की टीम का। इस साल भी सफ़ीर पाकिस्तान और जियो की टीम ने नहायत अहम तरीन किरदार अदा किया। कंटिन्यूसली न्यूज़ पैकेजेस गए जियो पर, जिसको जनाब हमारे मियाँ साहब और हमारे कैमरामैन अजीम खान ने उसको कोऑर्डिनेट किया, और हमारी दूसरी टीम ने प्रोडक्शन की पूरे प्रोग्राम की, जिसमें नबील अहमद और बैरी और विक्टर जो है वो शामिल रहे, और बहुत ही नहायत खूबसूरती से इसको तरतीब दिया। काफ़ी मैसेजेस भी दिए। ओवरऑल अपना का कन्वेंशन जो है वो कामयाब रहा। मुशायरा बिगेस्ट मुशायरा था, बड़ा ऑर्गेनाइज और कामयाब तरीन मुशायरा था। ऑफ कोर्स राघव बॉयज़ ने बहुत अच्छी पेशकश थी, उनके गानों की तरतीब पेशकश बहुत अच्छी, रिफाकत और सामा ने भी अच्छा काम किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स सैटरडे नाइट का गाला में इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को भी इनवाइट किया गया, जिसमें महमूद खान और आपके मुनीर अख्तर शिकागो से शामिल थे। ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया से महर तबादबाई और कसमदाद और आसिफ महमूद भी उसमें शामिल थे, नजीब गौरी भी शामिल थे। ये प्रोग्राम नहायत ही कामयाब रहा। इस बार डॉक्टर शेखानी ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं इनको सलूट करता हूँ, और आइंदा भी वो इस तरीके से अगर काम करते रहेंगे। नाज़रीन, अपना के इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है। अब होता है कि रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट जावेद सुलेमान न्यूयॉर्क के जो है वो अपना के प्रेसिडेंट एलेक्ट बन चुके हैं। इसके अलावा फरीद कादी ने बड़ी सरप्राइज़ विक्ट्री हासिल की लार्ज वोटों से, जो कि जॉर्जिया से उनका ताल्लुक है, और जनाब आसिफ रहमान जो है वो अनअपोज जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। बहरहाल हार और जीत होती रहती है, और यह है कि हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। नाज़रीन, डॉक्टर मंजूर तारिक और उनकी फैमिली ने बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा किया इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, और उनकी टीम ने भी बहुत मेहनत से लगन से काम किया। नाज़रीन, इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया एंड्रिया कार्सन की एक रिपोर्ट, और हसन फाउंडेशन के जनाब मुख्तार साहब जो कि प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं चैरिटी के सिलसिले में, वो रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। नाज़रीन, भूलिए नहीं अपने मैसेज रिकॉर्ड कराना, जाग पाकिस्तान में अपने मैसेज रिकॉर्ड कराएं, अपने ख्यालों का इजहार करें कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे कैसे गामजन करें, पाकिस्तानी अवाम को कैसे जगाएं और उनको कैसे एजुकेट करें कि भाई आपने आगे बढ़ना है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, हमें अमन कायम रखना है, हमें दहशतगर्दों की निशानदेही करनी है, और हमें ईमानदार और अच्छे लोगों को मुंतखब करना है। नाज़रीन, तो आइए लिए चलते हैं आपको लोकल ग्लोबल। I love Apna. I have worked in Apna for 33 years of its 34-year existence. I have served in almost every capacity in Apna, and I wanted to make sure that this function is remembered as one of the great Apna functions. We have grown from then to be the representative body of over 17,000 Pakistani physician descent, who now they practice in North America. When we think of the journey Apna has taken, we are and we should be very proud. There are 850,085 actively licensed physicians in the United States and its territories at this time. We also know that 188,000 are international medical graduates.
And I'm pleased to report that the third largest group of international medical graduates who have licenses in the United States are physicians who trained in medical school in Pakistan. I would say that many of you may have noticed that one of my recent visits to Pakistan coincided with the U.S. action against Osama bin Laden. And I think it's worth saying here and saying out loud that, as both the President and the Secretary of State have said, our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden. And many of you who saw President Obama say on 60 Minutes that more terrorists have been captured and killed in Pakistan than any other country in the world means this relationship is extremely important, and there's more to do. I sincerely believe that APNA has demonstrated the capability of being a strong force in our world today. It is why I ran for president, and it is my genuine goal to make APNA an even more effective vehicle for collectivizing our will to help as many people as we can. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे It is an amazing confluence of events that have brought us halfway around the world to the very center of this great nation, the USA. कैसी हलचल जा रही है, क्या हो रहा है आजकल यहाँ पे? आज ये अपना की मीटिंग है एनुअल, तो इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और मेंबर्स आए हुए हैं. एजुकेशन, सोशल इंटीग्रेशन और एक किस्म की फैमिली गैदरिंग है अमंग द फिजिशियंस. माशाल्लाह बहुत ग्रैंड स्केल पे हो रही है. तारक साहब ने कहा था कि I'm going to have one of the bigger and better meeting, and looks like that's the way it is going. हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पाकिस्तान की याद भी ख़त्म हो गई है, इतना अच्छा लग रहा है. और सब यहाँ आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के और इंडिया के और सारे लोगों से मुलाकात हो रही है. Wonderful, wonderful. It's very nice. Last night we went there. It's a very nice convention. How do you compare this summer meeting with others? With Dallas? Yes. Well, Dallas is a bigger city, but I think we have a very good attendance. Midwest में कई लोग आए हैं, कई रौनकें हैं यहाँ पे, और the show is pretty good. The bazaar is very good. I think that you do a remarkable job always, and I think that we are, as Pakistani Physicians of North America, are very proud to have Jio as our sponsor and as our very close friend. In Pakistani community comes from the doctors' professions, and this happened to be one of the very elegant and very powerful event. अपना के कन्वेंशन हमेशा अच्छे होते हैं. आपको पता है कि ये फिजिशियंस का अदारा है और सारे अमेरिका से पाकिस्तानी फिजिशियंस आते हैं. आपके क्या ख्याल हैं हमारे आज कन्वेंशन के बारे में? डॉक्टर मंजूर तारिक साहब ने बड़ा अच्छा ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में अपनी राय दें मुझे ब्रीफली. It was the best effort under the circumstances. They did a good job, and I really appreciate it, and we all appreciate it, and we are proud of it. I grew up going to APNA. I love APNA. I've met my best friends through APNA. It's just a very fun family weekend. It's a good convention. I think everybody's enjoying the convention as every year. ये एक ज़रा मुख्तलिफ सा कन्वेंशन है, इसलिए कि इसमें इंतज़ाम जो है 3-4 होटलों को मिला के एक बड़े कन्वेंशन सेंटर के साथ किया है. लेकिन जगह अच्छी है, खाना अच्छा है, सारे दोस्त यार आए और मीटिंगों का इंतज़ाम बहुत अच्छा है.
Convention is always good and it has been good since some time. The only thing which I didn't see any new change, but it's a good trend and it has to continue. माशाल्लाह कन्वेंशन बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो इस कन्वेंशन में यही होती है कि इतने लोगों से मुलाकात होती है, नए और पुराने। और अलबत्ता मुझे थोड़ा सा अफसोस इस दफ़ा है कि इस दफ़ा लोग कुछ कम नज़र आ रहे हैं मुझे। अपना के कन्वेंशन जो है हमेशा जो है वो अच्छे होते हैं फॉर फैमिलीज़, फॉर नेटवर्किंग, फॉर प्रोफेशनलिज्म। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, हर किस्म के प्रोफेशनल बातों का जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। बड़ी अच्छी जा रही है। 1902 बच्चा है, 1902 बच्चा है यहाँ। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त बहुत ही मशहूर हमारे शहर लॉस एंजलिस की आन शान और बान जनाब डॉक्टर मेहर तबादबाई, जिनको हम आपा का नाम जानते हैं, और हमारे भाई जनाब सैयद कैसर मदाद साहब यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ी दूर से पहले भी आए थे। पहले मेहर आपा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। बहुत बड़ी बात थी अपना की हिस्ट्री में ये। और आप कैसा फील करती हैं अपना अगर दोबारा आप कन्वेंशन में आई हैं, आपको कैसी फीलिंग है? जी इट्स वेरी नाइस जी। मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। अच्छा, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। हाँ जी। अच्छा 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 जी। तो आप कैसा फील कर रही हैं जो वो कन्वेंशन था ये कन्वेंशन है? जी इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। इट्स गुड टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स जी। लॉट ऑफ फ्रेंड्स? जी हाँ जी हाँ माशाल्लाह जी। अच्छा अच्छा। मतलब साहब आप कैसे फील कर रहे हैं? लास्ट ईयर भी आप आए थे और इस साल भी आप आए हैं। I think a convention very well organized once again, और कल रात जो मुशायरा था, आई थिंक कि हम लोग भी लॉस एंजलिस में बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, उर्दू मरकज़ और इंटरनेशनल और उर्दू राइटर सोसाइटी के, बट आई हैवंट सीन इतना ऑर्गेनाइज एंड और अच्छा मुशायरा जो कि अपना के एहतमाम से हुआ, और very impressed. I think it's a great thing to get everyone together. And it's been a great success in St. Louis. You know, we've had a lot of people come out and the turnout's been beautiful. There's so many people, we're meeting new friends. It's a good place to meet people that you met from other previous conventions and to get together with all your friends. मैं हमारे ख्याल से तो सेंट लुइस की तादाद के हिसाब से और सेंट लुइस की वसअत के हिसाब से ये अच्छा कन्वेंशन है। हमारे पास जो है कल तकरीबन 2000 लोग थे और आज जो है वो तकरीबन हमने 2200 सीटें भेज दी हैं और तकरीबन फैमिलीज़ के हिसाब से 8000 लोग इधर मौजूद हैं। Yes, I strongly believe the convention is very successful and there's a lot effort has been placed on this, and I believe this is most likely the biggest event in the history of St. Louis. I'm having a very wonderful time. No complaint? No complaints. I think they've done a good job in organizing it. I think they've done a very good job in spreading out the convention around. जी मुशायरा बहुत अच्छा था. It was one of the best ones I have seen in a long time. बहुत प्यारा. आपको कैसा लग रहा है कन्वेंशन? बहुत अच्छा लग रहा है कन्वेंशन में. बहुत ही उम्दा अरेंजमेंट किया है इन लोगों ने. नायाब अली खान माशाल्लाह रात को उन्होंने क्या खूबसूरत गायकी का अंदाज़ पेश किया है. मुझे असद अमानत और उस्ताद अमानत अली खान की याद आ गई. The way he going to be maybe the lead group in Inshallah Pakistan. What's your feeling about that last night? It was great. Great audience, great arrangements. और अपना ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट बहुत अच्छी है. इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया. बहुत मज़ा आया हम लोगों को. कहना चाहूँगा कि हम अपना वालों का बहुत एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ पर आए और इन लोगों के सामने परफॉर्म किया और ये लोग इतने लवली ऑडियंस हमें मिली. I'm very happy. I really appreciate it. I'm Dr. Tariq's sister-in-law, and I'm so proud of him and all of this that he's put up. This amazing program that he's done, and I'm very proud of him and to you for covering it. That's what I'm here for, to have fun and no politics. We're really enjoying. We have met a lot of friends from all over the country, and we are really having a good time. Enjoying the Pakistani food also. माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और वकार साहब मैं ये बहुत सालों से अटेंड कर रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि हर बार एक नई चीज़ नज़र आती है और हर बार ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा एफर्ट और लोगों का ज़्यादा जोश जज्बा नज़र आता है. Very good, very well organized. We really enjoyed a lot. You having fun? Oh yes, a lot. It's been a pleasure be here. अपना का जो event है always very exciting. Fashion show was excellent, audience was great, और response was wonderful. So
ओवरऑल अच्छा है, ब्यूटीफुल, हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं सेंट लुइस को। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी कंट्री में ही हूँ एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और इट्स बीइंग प्लेजर कि हमने अपना में पार्टिसिपेट किया एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर टू। I think it's a great convention. I think it's a great demonstration of the Pakistani American community that we're involved with a lot of things here in the U.S. A lot of productive, very positive things, such as being physicians, such as providing health care to Americans, not just Pakistani Americans. I think there's been a lot of great events. Alhamdulillah, we are getting a good response here. We would like people to donate and come and sponsor an orphan. You know, you've been a great supporter of Islamic Relief and our work is really transparent and everybody knows. बहुत शुक्रिया। मैं अपनी कामयाबी भी सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे दोस्तों की मोहब्बत है, मेरे दोस्तों की सपोर्ट है, मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे सीनियर्स की सपोर्ट है, उनके मशवरे जिन्होंने मुझे आज ये कामयाबी दी। इस दफ़ा काफ़ी लोग नज़र आए कन्वेंशन में और माशाल्लाह से इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आज आ गया है। जावेद सुलेमान प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। I always enjoy और I think that this is a very good meeting too. So we are having fun, we are having good time. कन्वेंशन इस बार का अच्छा है। मेरा ख़्याल है पिछले जो साल का कन्वेंशन था डैलस में, उसने बेंचमार्क इन कन्वेंशंस के लिए बना दिया है। जो अब मुश्किल है उस बेंचमार्क को अचीव करना और उसको बेटर करना, तो मेरा ख़्याल है अब ये हर कन्वेंशन के लिए एक ज़रूरी है कि उसको फॉलो करें और पूरी कोशिश करें कि उस बेंचमार्क तक पहुँचें। अच्छा कन्वेंशन है लेकिन इम्प्रूवमेंट और इसमें हो सकती थी। तो ये अपना का फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और अपना का फंक्शन जो होता है समर का, ये एक फैमिली जो है ओकेजन होता है जिसमें पूरी फैमिली के लिए कुछ न कुछ करने के लिए होता है। इस्लामिक सेंटर सेंट गैब्रियल वैली वॉलनट कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में कांग्रेस वुमेन जूडी चू, जो एशियन कॉकस की चेयरमैन हैं, और कांग्रेसमैन एंड्रिया कार्सन के एग्जाज में एक आउटरीच तकरीब मुनक़्क़द की गई जो नहायत कामयाब रही। इस मौके पर यहाँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात जमा थीं जो पाकिस्तान से वालियाना लगाव रखती हैं। याद रहे, पाकिस्तानी अमेरिकन हमेशा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं। हालिया ओबामा के बयान के बाद जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में फ़ौज की कमी और वहाँ से फ़ौजों की वापसी के बारे में एक वादे बयान दिया, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया और टॉक शोज़ में ये बात वादे तौर पर देखी गई कि शायद अब ये जंग पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी और पाकिस्तान पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में, क्या ये वार अब पाकिस्तान मुंतकिल होगी? जूडी चू कांग्रेस वुमेन जो एशियन कॉकस की चेयरमैन भी हैं और एंड्रिया कार्सन कांग्रेसमैन ने अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया। You know, I'm an honorary Pakistani. I love the Pakistani people deeply. I am concerned about some elements within the governmental structure and some elements within the intelligence service who have not reciprocated as it relates to intelligence sharing, have not reciprocated as it relates to mutual cooperation with the military. Now, with that said, I think that we also have to respect Pakistan as a sovereign nation. And we also have to respect their autonomy, because Pakistan does have nuclear capabilities, which concerns many in that region, particularly India. But I'm also concerned, given in light of bin Laden's announced death, that there were government elements who were protecting bin Laden. That concerns me. It will always concern me. But I think at the end of the day, we have to know and recognize that Pakistan has been a huge supporter and critical ally in the fight in war on terrorism and international drug trafficking. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, family and friends, on behalf of Hassan Foundation, and thank you so much for coming here. It's a wonderful Saturday. You could have been doing 101 other things, and you decided to come here instead. I'm going to be brief. I just want to give you an update on Hassan Foundation's progress. Since inception of Hassan Foundation, 2006, until we introduced Hassan Foundation in October 2010,
2010, we had started putting wells in different areas in Pakistan. Since then, the number of wells has gone up to 113. Our cost for these wells is somewhere from $500 to $1,000. There are places that our cost has been as low as $250. But the max is about $1,000. It all depends on the terrain, the depth, logistics, and availability of support system. Our requirement for where we put our wells, our next projects, Hassan Foundation has taken active part in all the disasters that have hit Pakistan, including earthquakes, floods, internally displaced refugees from Bajawar, internally displaced refugees in Swat, and then came the big flood. Hassan Foundation started supporting the displaced people, those who had lost their homes. It was in less than 72 hours, Hassan Foundation started feeding about 1,000 people with hot meals. We provided them with support of clothes, shelter. We had provided home for 45 people for 2 months in our own apartments there. Hassan Foundation took active part in that too. So far, we have completed 42 homes for the flood victims. Our homes comprise a large room, 20 by 14, a kitchen, a bathroom, including a toilet, complete electrification, and a fan. Our cost, $1,000. And we achieve this only through the support of local volunteers. That they go shop multiple places, they haggle the price, and bring it down. And I want you to know that we don't hire anyone to run these projects for us. Our health project. Hassan Foundation has started a sudden cardiac death prevention research cell in Peshawar. The purpose of that research cell is to start a circuit of lectures that will educate local physicians in evidence-based medicine so we can reduce cardiovascular mortality and other diseases. In addition to that, we are supporting the local hospital with pacemakers for people who absolutely cannot afford it. The cost of a pacemaker has been about $650. We support patients. They absolutely have no means of paying for it. Usually they come in with either a complete heart block or they have no pulse to work with. They put a temporary wire in them. When we introduced Hassan Foundation in October 2010, we had only 15 students on the scholarships. That number has gone up to 57 students. We give scholarships to only college-bound students. We prefer that they go to vocational schools because that is the quickest and the shortest way to start making money. Our next project, since our introduction, has been the introduction of our website. You can get all the information that you need. It keeps getting updated on a regular basis. We also have started our Facebook, and our tireless friends, they are working on it day and night. Quick, fast, all the information is put on either the Facebook or on the website. We all like something special.
He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, तो ये थी आज के प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश। आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ ब्यूरो चीफ्स हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में जनाब जहांगीर लोधी को आप रिपोर्ट दे सकते हैं, सफीर पाकिस्तान की, और आपके ऑफकोर्स ह्यूस्टन टेक्सास में सईद शेख हैं, जनाब फैयाज मर्चेंट साहब हैं, उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं अगर आपको रिपोर्ट्स हम तक पहुंचानी है। ऑफकोर्स मिशिगन डिट्रॉइट में नादिमा राना हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। कोई अगर आपको रिपोर्ट्स भेजनी है मिशिगन डिट्रॉइट से या आसपास की सिटी से, उनको कॉल करें, उनसे रब्ता कायम करें। डीसी में डेफिनेटली हमने रिसेंटली नुमाइंदा अपना अपॉइंट किया ताकि वो हमें वहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह भेजे। तो ये पूरा नेटवर्क हम कायम करें ताकि मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट्स हमसे पहुँच सके। नादीन, तो राब्ते में रहिए। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, और जाग पाकिस्तान में अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करना मत भूलिए ताकि अपने मैसेज हम रिले करें और पूरी दुनिया आपकी आवाज़ सुने और आपके ख्यालात सुने। इसके अलावा अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे पॉपुलर एंकर्स को, तो वो भी मैसेज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आपके वो मैसेजेस, वो आपके सवालात उन तमाम पॉपुलर एंकर्स तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।